Good evening and welcome to the Newshour Agenda. I'm Madhavdas G. Viewers, it doesn't get more bizarre than this. Even as consultations and confrontations are on in the JPC over the Waqf Amendment Bill, more and more leaders are making statements that show exactly why this is a reform that is perhaps very crucial. In a meeting organized by the Jamiat Ulema in Assam, its state chief, Maulana Badruddin Ajmal, has made a bizarre claim. He has accused the government of obstructing the rightful return of Waqf lands, claiming that around 9.7 lakh acres of government land in India are actually Waqf properties and should be returned to the Waqf board. And while making this claim, he's even dragged in the parliament into the Waqf storm, saying that even the Indian parliament is built on Waqf land. Astonishingly, he also went on to demand that prominent landmarks sitting on Waqf land should be returned to their rightful owners. Now that is, of course, in this case, the Waqf board. Listen in. Aji 9.7 lakhs property ase, acre ase, hunumuno kotha noy. A down dog, moi hunisu nadanu kiman khotto hoy. Je amar Bharatborshor je parliament ase, ei parliamento at time Waqfar amar property ase. Eto rod banu hoise. पार्लियामेंट जहाँ पे बना है वो भी लगभग बहुत पुराने टाइम से वक़्फ बोर्ड है उसके बोर्ड के अंडर में उसके ऊपर बना हुआ है और बड़े बड़े होटल उसी के ऊपर बने हुए हैं और वो कितना है 1000 रुपये उसका किराया है। ताजमहल में आप अंदर घुस जाओ जाके निकलने का 1000 रुपये टैक्स लग जाएगा। एक कप चाय पियो तो 5000 रुपये लगता है। तो ये कोई इंसाफ की बात है? जुल्म की भी कोई हद होती है। ये जुल्म का पाबंदी बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अल्लाह इन लोगों को इसको सोचने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। What's even more shocking is that Ajmal's outlandish claim found a backing from SP MLA Abu Azmi, who, while endorsing the claim, went a step ahead and demanded that MPs pay rent, suggesting that even official residences allotted to them are built on Waqf land. लेकिन जब वक्फ बोर्ड की जमीन है ना तो बेची नहीं जा सकती। एक बार वो अल्लाह की जमीन है तो एक बार जमीन हो गई तो रहती दुनिया तक वक्फ ही रहेगी। हाँ, वो रेंट पे जा सकती है, लीज पे जा सकती है। क्या जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं आप उनसे भी रेंट मांगेंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट की जमीन पर भी दावा हो रहा है? बिल्कुल, जितनी जमीनें वक्फ की हैं वो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया हुआ है। And viewers, as these claims are being made that even Parliament stands on Waqf property, one wonders where will all of this end? But you'd be surprised to know that in the past as well, similar bizarre claims have been made by the Waqf boards in different parts of the country. Look at what has been claimed earlier, that a mosque existing on the Allahabad High Court land, and its status is that the Supreme Court has dismissed the appeals against this particular eviction as well. There's also, in fact, the Supreme Court asking that can a leased property be made a Waqf property. Now, also in the past, there has been claim of the Surat Municipal Corporation building. The status is that the Waqf Tribunal has dismissed the claim as illegal in this particular case. There's also, of course, a claim that was made earlier of 1,654 acres of Manikonda Jagir village in Hyderabad. The status is that Supreme Court has returned the land to the state government. Earlier, there's another claim that was made in relation to Tiruchendurai village, which is also housing a 1500-year-old Hindu temple. The status is that it's registered as Waqf property in 1956. The dispute is ongoing. Another claim that has been made is in relation to Taj Mahal. The status is that Supreme Court has asked petitioners to furnish a deed signed by Shah Jahan in this particular case. Yet another case is of 123 properties that belong to the government of India. The centre has decided to recover the properties as declared Waqf under the UPA regime. And let's also listen into the response of the union government. The Union Minister for Minorities, Kiran Rijiju, reacted to these claims. Listen in. But calling Parliament a Waqf land, how gross would that be? And is it even legal to call Parliament a Waqf land? Would you believe that? No, that is what I'm saying. I'm not getting into the individual claims, but like some people claim Parliament to be on the Waqf property,
Similarly, there are many other claims. I had given examples in the parliament also, like Surat Municipal Corporation, the whole complex was claimed as a Waqf property, or the CGO complex. All the central government offices are there. They're claiming those areas to be Waqf property. Some people claim Taj Mahal as Waqf property. My only suggestion to the citizens of our country is, do not get misled by the people who are playing politics. You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Let's take this across to our guest. Joining us is Rohan Gupta, national spokesperson of the BJP. Karan Verma, author, is with us. Tehseen Poonawala, political analyst, joins us. We also have with us on the show Akhilesh Katiyar, national spokesperson of the Samajwadi Party. But joining us also is Haji Mehardeen Rangrez, spokesperson of the MIM. Haji Mehardeen ji, आप क्या बदरुद्दीन अजमल के कमेंट को इंडोर्स करते हैं कि पार्लियामेंट इंडीड वक्फ प्रॉपर्टी पे खड़ी है? क्योंकि यहां तक हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी वो तो ये कह रहे हैं कि सारे सांसदों से रेंट भी रिकवर किया जाना चाहिए। ये कितना टेनेबल क्लेम है सर? देखिए सर, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई ऑथेंटिक उनके पास कोई सबूत होगा। ऐसे तो कोई कुछ नहीं कह देगा, क्योंकि लफाजी करना तो बड़ा आसान होता है। जमीन उसको जो है पेश करना, बताना, उसके फैक्ट जब तक पता नहीं होंगे तब तक कोई बात करना, वो सब चीजें अलग बात है। मगर हमारा मानना है वक्फ की संपत्तियों को, जितने भी अडानी अंबानी का जो घर है मुंबई में, वो भी वक्फ की संपत्ति है। और जो अशोक का होटल है, ना जाने कितनी संपत्तियां इस जो है दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में इतनी सारी संपत्तियां हैं जो वक्फ की लैंड पे बनी हुई है। उनको जो रेंट दिया जाता है 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए। तो जो सरकार है वो वक्फ अमेंडमेंट का बिल लेकर आ रही, तो उसमें जो बिल लेकर आ रही, तो उसमें हमारी संपत्तियों को पहले बिल लेकर आई NRC CAA का, उसमें हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी। अब जो है हमारी जमीनों छीन। रंगरेज जी, सिंपल सवाल है, पार्लियामेंट कब बनाया गया आप जानते हैं? लेकर आती है। पार्लियामेंट कौन से साल में कंस्ट्रक्ट की गई, जानकारी है आपको? देखिए मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 1921 से लेकर 24 तक कंस्ट्रक्शन हुई इस इमारत की, आजादी से पहले की इमारत है। और जो 1947 में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टीज थी, अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। इस पे अब वक्फ की क्लेम डाल के मतलब फायदा क्या है? क्या किस तरह का आप नैरेटिव चलाना चाहते हैं, किस तरह का क्लेम करना चाहते हैं? देखिए, जब से दुनिया बनी है, जब से लोगों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने वक्फ की है संपत्ति, और ये प्राइवेट संपत्ति है, ना कि ये सरकारी संपत्ति है। तो ये भी समझना पड़ेगा। अगर हम कोई क्लेम कर रहे हैं, अगर हम बता रहे हैं कि हमारी है, तो उसका हम लॉजिक से देश की पार्लियामेंट प्राइवेट संपत्ति है। अपने पेट में, अगर हमने अभी कहा है, अभी से ही लोगों के पेट में दर्द हो गया, बताइए मेहरदीन जी, आप क्या कह रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट अब प्राइवेट संपत्ति है, देश के नागरिकों की संपत्ति नहीं है? हमारी डेमोक्रेसी की संपत्ति होती है सर। वक्फ की संपत्ति जो होती है वो वक्फ की हुई संपत्ति होती है सर, समझिए बात को थोड़ा। रोहन गुप्ता, दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी, वेदर इट इज acquired by the government of India, once it's a वक्फ property, always a वक्फ property. Please respond to Mr. Mehardeen. See, Madhav, this is the problem with the whole issue. Something which is historically, maybe it is not correct, or maybe it requires amendments as per the time goes. We should not be against that. The kind of powers which are given right now to Waqf board, if you see the way they can, put their claim on any property across the country, there needs some revision. I am not saying that it should be changed this way or that way, but the way the country is growing, the way the things are changing. Okay, Rohan, there's some issue with the audio. We'll just fix the audio problem and come back to you in just a minute. But I want to bring in Akhilesh Katiyar. Akhilesh Katiyar, आपके पार्टी, ये सिर्फ बदरुद्दीन अजमल की बात नहीं है, आपके पार्टी के नेता है अबू आजमी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये सांसद जो हैं उन सब से किराया लिया जाना चाहिए। मतलब कुछ तो मतलब सेंस की बात होनी चाहिए। ये देश के पार्लियामेंट है, इसको भी हम किसी भी धर्म की बात हो, किसी वक्त की बात हो, अल्टीमेटली बीजेपी यही कहेगा कि इसी वजह से ये इस रिफॉर्म को, इस अमेंडमेंट को लाया जा रहा है कानूनी तौर पे। माधव साहब बिल्कुल ठीक बात है। 2-3 बातें जो अभी संजय जी के द्वारा आ रही थी, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आजादी के बाद जो हालात बदले, उसमें पहले क्या चलता रहा है, अब हमें नए तरीके से इस पे बात करनी चाहिए। जैसे कोर्ट ये नए अमेंडमेंट में कहते हैं कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इसमें डाले जाएं।
इस बात को तो शायद माधव साहब कोई नहीं पसंद ये चाहेगा कि जब ये मुस्लिम समाज का मामला है तो आप इसमें दो और दूसरे रिलीजन के लोग क्यों डालना चाहते हैं? भाई महिला मेंबर्स का मामला था तो राना सिद्दीकी जी तो बहुत पहले बार काउंसिल की सदस्य नहीं है इसमें। हम ये मानते हैं कि जैसे आप जो पावर शिफ्ट कर रहे हैं, आप सुधार के मकसद से बात करें, लेकिन नीयत में भी तो साफ गोई दिखे। आप चाहते हैं कि डीएम को पावर मिल जाए, जो कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन आते थे, सर्वे कमिश्नर होता था, उसकी रिपोर्ट पे फैसले होते ज्यादा ऑथेंटिक होते थे। हम ये चाहते हैं कि सुधार हो, और जो वक्फ की जमीन से जो मुस्लिम भाइयों के भला होने की बात सरकार कहती है, उसकी नीयत में भी ईमानदारी दिखे कि हम रियल में इससे जनहित के मामले में बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें आप डीएम को पावर दे देंगे, बहुत सारी जगहों पे सरकार के साथ मामले हैं, तो वो चीजें फिर उतनी ईमानदारी से माधव जी हो नहीं पाएंगी। हम ये चाहते लेकिन हैं सर कि एक चीज क्या आप ये सब मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो पावर्स दिए गए यूपीए सरकार के दौरान, बीजेपी का यह कहना है कि स्वीपिंग पावर्स हैं ये, कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी कह सकती है। तो ये मैंने अभी कई सारे उदाहरण दिए। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुरानी मंदिर है तिरुचेंदुरई में, जिसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताई गई है। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसा जिन्हें कोर्ट ने भी जिनको नकारा है। हम इस बात के भी पक्ष में नहीं है कि किसी बात को बिना सिर पैर के कह दिया जाए। भाई इस देश में कोर्ट है, कोर्ट को अथॉरिटी है, वो डिसीजन देगी, कोर्ट पेपर चेक करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट देखेंगे, और डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही कोर्ट फैसला देगी। और यहां जो वक्फ को स्टेट में जो लीड करते हैं, वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं, वो चेयरमैन बनाते हैं। Okay. हम ये चाहते हैं कि तो आप इतना तो कहेंगे कि जो अबू आजमी कह रहे हैं वो गलत है? आप मानेंगे कि आपके जो पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने गलत बयान दिया? अबू आजमी साहब को नहीं, मैं ये नहीं, वो बहुत सम्मानित सदस्य हैं, उनका अपना एंगल है, उन्होंने किस बात के किस आधार पे ये बात कही, इसको मैं जस्टिफाई माधव साहब कैसे कर सकता हूं? सर आप मेरी जो प्रवक्ता है, अग्री करते कि नहीं अग्री करते, इतना बता दीजिए बस। नहीं, हम पार्टी की राय साझा कर रहे हैं। अबू आदमी साहब से हम बात करके अगर कल शो करेंगे तो हम जरूर बताएंगे। पार्टी की राय क्या है कि सांसदों से किराया लिया जाना चाहिए वक्फ के बेसिस पे कि नहीं लिया जाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सरकार को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बट ओके। रोहन गुप्ता, सरकार को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। नो आंसर्स कमिंग देयर फ्रॉम द एसपी स्पोक्सपर्सन, बट यू आर इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स इनटू द वक्फ बोर्ड एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। They are not opposed to reform, but the niyat should be correct. The intent should be correct. See, the question of intent comes, if you have the history of such cases, you tell me triple talaq bill came. Everybody questions BJP government intention. What harm has done to the genuine people? You tell me. There was a hue and cry made against CAA NRC. You tell me what negative things are done to Muslim Samaj. So, niyat तो आपके दिमाग में है। अगर हिस्टोरिकली कोई चीज गलत है, अगर मुस्लिम भाई बहनों को, पूरी कम्युनिटी को अगर वक्फ प्रॉपर्टी का फायदा दिलाने का सरकार का इंटेंशन है, और सरकार ने थोपा नहीं है, गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर सजेशंस फ्रॉम द पीपल। इट इज यू पीपल यू आर सेइंग दैट नहीं आपकी मस्जिद ले ली जाएगी, नहीं, कहां पे हड़पने की बात की? सरकार ने थोप दिया है। सरकार हैज, द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर सजेशंस, एंड व्हाई द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर सजेशंस? दिस काइंड ऑफ केसेस व्हिच आर कमिंग अप कि पार्लियामेंट की भी जमीन हमारी है, ये भी जमीन हमारी है, ये सब इसलिए है क्योंकि एबिडेंट पावर पास्ट में दिया गया है, किसी को किसी की जमीन नहीं देनी। अगर देश आगे बढ़ रहा है, if we are growing, we have to change with the times. And something which is done wrong in the past, if the amendment is done to that, after taking everybody's consensus, हर चीज को नियति के सवाल से देखेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। फिर तो आपकी आंख में तकलीफ है। आप करिए, सजेशन करिए, उसके बाद बिल बनेगा। किसने जमीन ले ली अभी तक? किसी ने नहीं ली। पर ऐसी बातें आएगी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि इवन पार्लियामेंट लैंड इज ऑफ वक्फ बोर्ड, हु विल बिलीव दैट? That is a clear-cut indication that this is the result of the evident power which has been given by past government to वक्फ बोर्ड। If that was not the case, ये बात नहीं आती कि पार्लियामेंट की भी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जी, Tehseen, I want to bring you to the statement of Mr. Ajmal. Amongst the many things he said in relation to this issue, one of the points is in relation to VHP RSS. He's saying they'll tomorrow come out and say that 500,000 years old graveyard land was earlier a playground, land in which namaz is being performed should be a place where puja pandal should be there. Gundas capturing a land does not make it the owner, does not make them the owner of that particular property. But in a sense,
Isn't that what the Waqf Amendment Bill is doing? If they're removing Section 40 of this 1995 Act, which gives power to Waqf Board to decide any question of whether a property is a Waqf property or not. Tehseen. Thank you, Madhav. Good evening, Madhav. Thank you so much for having me on the show. It's a very complex issue, so I was quite surprised at Ajmal Saab's statement. And I was wondering, why would Ajmal Saab make such a ridiculous statement? There are statements and then there are ridiculous statements. This is a ridiculous statement. And of course, the MIM spokesperson on the show went one step ahead and said, Jab se dunya bani. Now I'm confused. Did he mean the universe, which was made 13.8 billion years ago? Did he mean the earth, which was made 4.6 billion years ago? Or did he mean humanity, which started 4.3 billion years ago, that Waqf had land? I'm very confused with what he's trying to say. So if you can clarify that for my knowledge. The fact of the matter is, Ajmal Saab said this only to polarize the elections, and OAC is putting fuel in fire. Why? OAC is a member of this JPC. It is unethical and unaccepted that a JPC member speaks outside. But OAC is doing this to polarize. Why? Because Maharashtra elections are coming, so they want to polarize. So both of these people are helping the BJP. BJP, on the other hand, is also playing politics. They get in Kharge Saab inside of JPC when he's not a member of JPC. That's not the issue for today. I'm not diverting. So they want to divert the issue. Can Waqf take any land that they want? No, they cannot. They can only claim land whose legitimate records are in the revenue department pre-partition. You cannot one day get up and say, I fantasize that this is my land, I fantasize that that one's bungalow is my land, and take it. It doesn't work like that. The SP spokesperson is right. So people throwing this around, and if you throw it around, somebody went and asked for Taj. They got kicked out of court. Somebody say, oh, parliament, go to court, you'll see what will happen. You'll be thrown out. It cannot work like that. These guys are maligning the Muslim community. You see now, Section 40. Section 40 cannot be arbitrarily used. Justice Chandrachud, in a petition filed by a BJP member, Justice Chandrachud, Chief Justice said, Section 40 is protected under the fundamental rights, Article 25, 26, 29, 30. However, it cannot be arbitrarily used. But the BJP is also polarizing, so are these people. Can I tomorrow myself get up and say, your house is my house and it's Waqf property? You can't. There are rules for this. What they are doing is BJP wants to weaken the law and harass Muslims. And these people out here, what they want to do, they want to polarize the election so BJP wins. Both of this is a polarization game. Can we have a civil debate on a very important issue that governs our country, or that is an issue in our country? Neither party wants to do it. Okay, Karan Verma, this is nothing but an attempt to polarize, and I'm going to ask this question of the MIM spokesperson as well in just a minute. But, end of the day, you have bizarre claims that have been made in 2017. Vinay Katiyar, for instance, came out to say that, Taj Mahal is a Hindu temple. By this logic, even these claims are going to be bizarre. And, end of the day, we have a person like Mr. Ajmal, who's not even a member of the JPC. So why give importance or credence to the statements? Ultimately, if the JPC is going to decide the law, are we giving too much importance to Mr. Ajmal's comments? Karan. So, Madhav, to begin with, we must understand, Tehseen said that, this is not exactly a land grabbing thing and it's not arbitrary. Well, it is. I'll tell you how. 4 lakh acres back in 2009 today has galloped up to 9.7 lakh acres. That's what the Waqf property bank is about. 9.7 lakh acres, that's more than a 250% jump. 3 lakh properties back then in 2009, today they have 8.5 lakh properties. And it's not just come from the BJP or from the Hindu community, and it's not even a Hindu-Muslim issue, to be honest. It's an issue of justice. It's come from K. Rahman Khan, who was heading the JPC. He said it that Waqf is actually leading to land grabbing, and it's actually depriving many of the sections in the Muslim community of their rights. Because it's become a stranglehold of 20-25 families over the Waqf, and largely the upper castes, which is the Ashrafs, the Sayyids, the Siddiquis. In fact, Haji Rangrez Saab should be a torchbearer in this, and he should come forward and say, why is it that the Pasmanda Samaj, the Haji Samaj, they've been deprived of their rights in the entire property system. In fact, many of the widows, many of the orphaned, they've been denied rights, they've come forward. And Mr. Owaisi very conveniently cherry picks the Sachar committee and says that Muslims are backward and they deserve reservation. He doesn't pick up that aspect of Sachar, strongly advocates for the reforms in the Waqf. And those same reforms have been pushed by the BJP, at least they're being discussed. And so, just saying that this is a whole lot of hogwash, that's not true. Truth is, this is land grabbing, and we've seen consequences of that. 1500-year-old temple in Tamil Nadu was claimed by the Waqf. And then the onus comes on the other person to prove that this doesn't belong to the Waqf.
So, you know, it's a reverse burden of proof that we are saying under the section 40. So that needs to go now. And for them, to be honest, entire Prithvi, entire earth is Allah's. 7:128. So they believe that. Earth, whether round or flat, that's a different debate for a different discussion. Let's stick to the legality. Let's stick to the legality, and I want to that is where it's stemming from. Yeah, I want to bring in Mr. Mehardeen. Mr. Mehardeen, यहाँ पे सिर्फ बीजेपी या बीजेपी के समर्थक ही नहीं है जो कह रहे हैं कि आप गलत हैं। तहसील पूनावाला भी कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल राजनीति के से प्रेरित बातें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी सेंट्रल दिल्ली के प्रॉपर्टीज को लेके, तो फाइनली तो दिल्ली हाई कोर्ट ने विड्रॉ करने को कहा था। तो क्या ये पूरा मामला राजनीतिक है? क्या ओवैसी साहब इस मामले को इसलिए उठाने की महाराष्ट्र में चुनाव है? देखिए माधव जी, हम बैरिस्टर साहब ने बाकायदा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ये जो नैरेटिव और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो लोग हमारे पढ़कर यहाँ पर बैठते हैं टीवी डिबेट्स में, आप ये कहते हैं कि 9.7 लाख जो संपत्ति देश में जो है वो मुसलमानों के पास है, वक्फ के पास है। मैं कहता हूँ 2 मंदिर ऐसे हैं साउथ में जिनके पास इससे 2 गुना संपत्ति है, मगर उन पर बात नहीं होती। हमारी संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, सरकार का क्या काम है? और जो सच्चर कमेटी का बार बार करण भाई अभी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा सच्चर कमेटी की सिफारिश में? उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है दलितों से बदतर हालात में 1947 से पहले का किराया दे रहे हैं। रहमान खान साहब भी गलत है। आज के मौजूद भाई अगर रहमान खान साहब है संपत्तियों से आएंगे तो वो माइनॉरिटीज के लिए और हमारे मुसलमान भाई उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत है। और हम ये लड़ाई जमीन से लेकर संसद तक लड़ेंगे। हम अपनी जमीनों को नहीं खोने देंगे। और सरकार का जो एजेंडा है, जैसे उन्होंने हमारे देश की संपत्तियां बेच दी, इसी तरीके से हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनने के लिए सरकार वक्फ कानून लेकर आ रही है। तहसीन, very quickly. This is complete hogwash. The MIM is only helping the BJP. Why doesn't OAC start speak? He's been member of parliament for numerous terms. Why did he not remove these issues that time? Why through parliament he didn't get a notification of how much land is there? This is land grabbing. I disagree with Karan. This is land grabbing. And even in Uttar Pradesh, the case that you're talking about, where the Waqf board member went to court for against Ajmal, who appointed him? The BJP. State governments appoint these people. They are then going to court. Look, all of this is to get land, and the land is only going to prosperous 200 Muslim families. It should be distributed amongst poor Muslims, number one. Number two, people like MIM should not work with BJP. They're helping BJP polarize the election. Rohan Gupta, quick response. MIM is not doing nothing but helping BJP polarize the elections. See, this is the problem that everybody is talking about elections. Nobody is talking about poor Muslims. That is the basic problem. MIM tells Muslims that आपकी मस्जिद भी ले ली जाएगी. कांग्रेस बोलती है, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज बोलते हैं. Nobody is bothered. You have to see it from the angle of justice. If something is wrong which is happening, which is not helping anybody, you have to correct that. And again, there is a process. The government has not imposed the bill on people. It has asked for the suggestions that how to correct this thing so that in future this kind of things doesn't happen कि 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर कोई अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करे, कोई अपना अधिकार क्लेम करे. There is something wrong with the process. You need to correct the process. कोई जमीन लेके नहीं जा रहा है. संपत्ति होने से आपत्ति नहीं है. संपत्ति होने का जो पूरा जो माहौल करा किया गया कि जो आपने कहीं पे भी एबेंडेड पावर है उसके ऊपर सवाल है. मंदिर की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकती है, बट एबेंडेड पावर अंडर विच यू कैन क्लेम एनी प्रॉपर्टी. Well, all eyes are on the JPC. Perhaps this debate once again highlights the importance of the amendment, or whether it's required, whether it's not required. In any case, it's a very relevant debate. There are facts and arguments that are there coming in from either side. Nevertheless, one will have to see what the JPC finally decides. Haji Mehardeen Rangrez, thank you so much for joining us on this debate. All our other panelists will continue on debate number 2.